Hello everyone. In today's short video, I'll try and explain to you one of the interesting aspect of the Indian polity, and that is the veto powers of the President of India. Now, the President is an integral part of the Union Legislature. If we check Part 5, Chapter 2, which is dealing with the Union Legislature, Article 79 to 122. Article 79 basically says it's basically about the organization of Union Legislature, which says Union Legislature comprised of Lok Sabha, the lower house of the Parliament, Rajya Sabha, the upper house of the Parliament, and the President of India to give a assent to the bills that are passed by the Parliament. The Parliament or Union Legislature passes four different types of bills: ordinary bill, constitutional amendment bill, financial bill, and money bill. With respect to money bill can be introduced only in the lower house of the Union Legislature. It will be sent for a recommendation purpose only for 14 days to the upper house. So basically you can say that the nation's purse belongs to the lower house of the Union Legislature. But please understand that all those bills which are duly passed in both the houses, they becomes an act only when President of India gives an assent to the bill. So under Article 111, there are three alternatives available to the President of India, being an integral part of Union Legislature to decides the course of action on different bills that are passed in both the houses respectively. The first, President may give assent to the bill. Once President gives an assent to the bill, it becomes an act, straightforward. Second, President may withhold the bill, withhold the assent basically of the bill. And third, President may return the bill for reconsideration purpose. However, if the bill is passed again by the Parliament, in that case it becomes an obligatory for the President of India to give assent to such bills, and then it becomes an act. But then comes the question of the various categories of veto powers of President. The President of India basically possesses three categories of veto powers. These are absolute veto, which is very rarely used. Second is suspensive veto, applicable to the ordinary bill and not to the constitutional amendment bill. And third is a pocket veto. Now, what are the fundamental objectives behind, or what are the fundamental objectives why these veto powers are, given to the office of the President of India? The first reason is that President needs to prevent hasty and ill-considered bill passed by the Parliament, and second, to prevent a legislation which may be unconstitutional. So, these are the two objectives why President needs to use the veto power. Let's talk about the first category, that is absolute veto. Absolute veto basically means withholding of the assent, यानी जैसे बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट उसे withhold कर देंगे, which is rarely used veto. एक बार ये veto power जब प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं, so in that case bill जो है वो वहाँ पे end हो जाता है. It could not become an act. It is a rarely used. It can be used on two instances. One is in the case of private members' bills, and second in the case of government bill. But government bill only when the bill is passed, let's say by the Parliament, but meanwhile cabinet resigns, and the new cabinet basically advise the president not to give assent to such bills. तो ऐसे केस में president अपना absolute veto इस्तेमाल करेंगे, वो बिल वहाँ पे end हो जाएगा. ऐसा एक इंस्टेंस है इन 1954, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो एक्चुअली यूज्ड एब्सोल्यूट वेटो इन दिस बिल कॉल्ड पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल. पेप्सू बेसिकली क्या है? इट्स अ शॉर्ट हैंड नेम ऑफ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन. एक टेरिटरी थी. दोज ऑफ यू डोंट नो, बिफोर स्टेट्स वर मेड बाय द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, वी हैड ABCD कैटेगरीज ऑफ टेरिटरी. स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इट वॉज मर्ज विद द पंजाब स्टेट. Alright, so in this case, absolute veto was used. Then comes suspensive veto. Suspensive veto can be exercised by the president in case of returning the bill back to the parliament. लेकिन अगर वो बिल फिर से पास हो जाता है with amendment or without amendment, so in that case it becomes an obligatory for the president of India to give a assent to such bills. But this is not applicable to the the money bill, because in most number of money bills are basically introduced in the lower house only after the prior permission of the President of India. So normally the president give assent to the money bill, but this reconsideration is what we call
the suspensive veto, and then comes the pocket veto of the President of India. Pocket veto is very interesting because in this case, President neither ratifies nor rejects nor returns. वो कुछ नहीं करते. He or she simply keep the bill pending for an indefinite time. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अबाउट द टाइम लिमिट. तो प्रेसिडेंट इसमें कोई एक्शन नहीं लेते, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इस तरह का जो वेटो पावर है प्रेसिडेंट का, उसे हम कहेंगे पॉकेट वेटो. दूसरे कंट्रीज़ में जैसे कि यूएसए में देयर इज़ अ टाइम लिमिट ऑफ 10 years. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, पॉकेट वेटो असल में इस्तेमाल हुआ है इंडिया में, दैट इज़ समवेयर इन 1986 जब प्रेसिडेंट जेल सिंह actually exercised pocket veto in a bill which is known as the Indian Post Office Bill. तो वहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी थी इस बिल के अराउंड राजीव गांधी की सरकार में जब ये बिल बनाया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए. तो काफ़ी कंट्रोवर्सी के चलते 3 साल तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया प्रेसिडेंट ऑफिस के द्वारा. और जब नए प्रेसिडेंट बने वेंकटरमन, तो तब तक ऑलरेडी नेशनल फ्रंट की जो सरकार थी उन्होंने ये बिल वहाँ यानी कि प्रेसिडेंट ने उसे रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा और ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने उसे डिसाइड किया ड्रॉप करना. सो ये बिल कभी पास नहीं हुआ. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 विच मेक्स इट मैंडेटरी for the President of India or obligatory for the President of India to give assent to the Constitutional Amendment Bill. तो पॉकेट वेटो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एप्लीकेबल नहीं होगा. और प्रेसिडेंट के पास वेटो है ओवर स्टेट लेजिस्लेशन एज वेल. सो व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इट इज़ प्रेजेंटेड टू द गवर्नर. जैसे प्रेसिडेंट यूनियन लेजिस्लेचर में काम करते, सिमिलरली गवर्नर एक्ट्स इन द सिमिलर फैशन ना स्टेट लेजिस्लेचर. So when bill is passed by the state legislature is presented to governor for governor's assent. और गवर्नर के पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है. पहला, वो assent देंगे तो वो लॉ बन जाएगा. दूसरा, वो withhold कर सकते हैं अपना assent. एंड थर्ड, गवर्नर में रिटर्न द बिल फॉर अ रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. और चौथा है प्रेसिडेंट में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो चौथे ऑप्शन के मामले में प्रेसिडेंट हैज़ अ वेटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन एज वेल. I hope you understood basically the veto powers of the President of India. If you have any questions, comment down. That's all. Sign out.